A locomotive of mass m starts moving so that its velocity varies according to the law v is equal to k root s, where k is a constant and s is the distance covered. Find the total work performed by all the forces which are acting on the locomotive during the first t seconds after beginning of the locomotive. Okay, so basically अब यहाँ पे क्या हो जाता है, for a locomotive, if I consider this part, if I consider कि ये locomotive right में जा रहा है, so there will be a mg which acts in the downward direction, but there will be no work done. Work done divided by mg will be equal to 0 because there is no displacement in the vertically downward direction. Okay, because there is no displacement in the vertically downward direction. Okay, तो यहाँ पे work done will be equal to f dx. Okay, where x या फिर ds ले लेते हैं, where s is the displacement. Okay, s is the displacement of the body. Okay, अब work done का फॉर्मूला होता है mass into acceleration into ds. Okay, so यहाँ पे ये small work done हो गया. If I want to calculate the entire work done, I have to integrate this part. ठीक है, I have to integrate this part. Now the mass is constant, तो mass आ जाएगा बाहर. ठीक है. What about the acceleration? Is the acceleration constant? No. Okay, how do I know this part? Okay, how do I know this part? अगर आप देखोगे तो velocity यहाँ पे दिया है, velocity is given as k root s. Okay, it means that the velocity varies as per the time. Okay, the velocity varies as per the time. अब यहाँ पे let me differentiate this part. Now I will differentiate both the sides with respect to time. अब ध्यान से देखना, acceleration will be equal to dv divided by dt, that is velocity differentiated with respect to time. इसमें से k बाहर आ जाएगा. Okay, because k is constant. इसका डिफरेंशिएशन, रूट s का डिफरेंशिएशन देखो क्या आ जाएगा, ds डिवाइडेड बाय dt, इट विल बी इक्वल टू k डिवाइडेड बाय रूट s का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट s इनटू ds बाय dt. ओके, मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं, इट विल बी इक्वल टू ds बाय dt. तो अब यहाँ पे k डिवाइडेड बाय 2 रूट s इनटू ds by dt is the velocity. Okay, basically ds by dt is the velocity. Okay, displacement upon time, that is differentiation of displacement upon time is velocity. अब velocity के जगह पे I can substitute k root s. Okay, I can substitute, ये हो गया k divided by root s into k root s. अब यहाँ पे root s and root s will get cancelled out. Okay, root s and root s will get cancelled out. It will be equal to k square by 2. Okay, it will be equal to k square divided by 2. अब मुझे यहाँ पे आ गया acceleration. So if you see, the acceleration is now a constant value. ठीक है, k square by 2, क्योंकि k यहाँ पे constant है, 2 भी यहाँ पे constant है. Okay, so it is equal to k square divided by 2. Let me substitute the value over here. It will be equal to m k square divided by 2. It will be equal to integration of ds. Okay, it will be equal to integration of ds. So basically mk square divided by 2 into s will be the answer. But if you see, we want the answer in terms of time. Okay, we want the answer in the terms of time. Okay, so now how will I get this part in terms of time? अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक होता है, वेलोसिटी का वापस हम लोग वेलोसिटी के फॉर्मूले पे जाएंगे. इट इज इक्वल टू k रूट s. ओके, k रूट s. तो अब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी से मुझे चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी से मुझे टाइम का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी कैन बी रिटन एज ds डिवाइडेड बाय dt. इट विल बी इक्वल टू k into root s. Okay, so now over here 1 by root s will be equal to k dt और यहाँ पे आ गया ds. Now I will integrate on both the sides. When I integrate the right hand side, when I integrate on both the sides, यहाँ पे सबसे पहले the integration on the right hand side will give me the answer k जो constant रहेगा, dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t. ओके, 1 by root s का इंटीग्रेशन
1 by root s can be written as s raised to minus half. Okay, so it will be equal to s raised to, iska integration, if I integrate this part, it will be equal to s raised to minus half plus 1, which is equal to s raised to plus half divided by half. Okay, so it is equal to root s divided by half. Okay, तो अब रूट एस के जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, के टी डिवाइडेड बाई 2. ओके, आई विल टेक दिस हाफ ऑन द राइट हैंड साइड, रूट एस के जगह पे के टी डिवाइडेड बाई 2, और आई विल स्क्वायर दिस पार्ट ऑन बोथ द साइड्स. एस विल बी इक्वल टू के स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. तो एस के जगह पे नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट एम के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इनटू k square t square divided by 4. So it will be equal to mk raised to 4 t square divided by 4 into 2, which is equal to over here, which is equal to 8. Okay, so mk raised to 4 t square mk raised to 4 t square divided by 8, which is option number A.